That's before, and that's after the replacement. Alright, hello guys and welcome back to my channel. मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है. And today I am back with another informative and interesting video where I am going to get the tires of my car and also the rims replaced. I am going for alloy wheels as the car was supplied with steel wheels, and I'm also going to upgrade or upsize the tires. So alloy wheels install करते हैं और टायर को भी upsize करेंगे. The car has run 40,000 kilometers and the tire life is almost towards the end of it. Although there is tread left, but the tire has become hard and I don't want to push it any further. रबर जो है समय के साथ हार्ड हो जाता है. अगर आप विजुअली देखेंगे तो टायर में शायद ग्रिप रहेगा, पर उसको यूज़ करना एक सेफ्टी हैज़र्ड बन सकता है. तो टायर को टाइम पे चेंज कर लेना ज़रूरी होता है, जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ. ये जो प्रोसीजर्स आप देख रहे हो स्क्रीन पे, जो कि रिम पे टायर चढ़ाने वाला मशीन है, ये सब हर सिटी में हर छोटे से छोटे जगह पे भी अवेलेबल होता है. टायर इंस्टॉलेशन मशीन सबके पास आ गया है और व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट भी सबके पास हो जाता है. सो वॉट एवर प्रोसीजर्स यू आर ऑब्जर्विंग इन दिस वीडियो और द क्लिप्स दैट यू आर सीइंग आर वेरी कॉमन. इट इज़ अक्रॉस the country available almost in all major cities and even smaller cities, and it is followed by wheel alignment and wheel balancing, which is again digitally done across the whole of India. There are a couple of small little things that needs to be kept in mind. There will be a yellow or a blue color dot on the tire. It's a marking where the tire should be set onto the rim. It basically demarks the place where the air filling nozzle should be present. So I let the guy working on the tire know that and he did it perfectly. So just keep that in mind. आपको टायर के ऊपर एक येलो या ब्लू कलर का मार्क मिलेगा, उसको नोजल के साथ अलाइन करना होता है. ये आप अगर उनको बता देंगे जो इंस्टॉल कर रहा है तो वो उसको सही से कर देंगे. मेरे केस में बड़े आराम से ये हो गया. The installation cost would be something around 1500 to 2000 Indian rupees. 1500 से 2000 के बीच का कॉस्ट आता है इंस्टॉलेशन, जिसमें कि बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट भी हो जाता है. और ये कुछ बिफोर और आफ्टर शॉट्स है. देख लीजिए क्या डिफरेंस है, कैसी लग रही है गाड़ी एलॉय व्हील्स के साथ. सो दीज आर दी बिफोर एंड आफ्टर शॉट्स. डू एंजॉय देम एंड सी हाउ द कार लुक्स लाइक विद द न्यू एलॉयज. If you're liking the video till here, do subscribe. Don't forget to subscribe. ज़रूर subscribe कीजिएगा. Alright, now that you have enjoyed the cinematic shots, let's get down to the technical specifications of all these modifications. हम लोग डिटेल में जानते हैं कि कौन सी चीज़ें इंस्टॉल की गई और क्या दिमाग में रख के वो किया गया है. So let's start with the rims. The rim that I have used is a 13-inch rim from MARUTI genuine parts. It's an MGP part, and this was the stock rim that came with the top end models of Alto K10, and I have also seen some of the Eco fitted with these rims. The cost of the rim was around 3300 rupees per piece. It is available on Budmo. I will attach the link in the description to check it. तो जो रिम मैंने इंस्टॉल किया है वो है मारुति जेन्युइन पार्ट का 13 इंच का रिम. ये ऑल्टो K10 गाड़ी में और इको गाड़ी में भी आता था, कुछ हायर मॉडल्स में आते थे. और क्योंकि ये मारुति सुजुकी का पार्ट है तो क्वालिटी के मामले में आप बिल्कुल संतुष्ट रह सकते हैं. Alright, so many of you might have observed JWL imprinted on alloy wheels, and it stands for Japan Light Alloy Wheel. It's a certification given as per the quality of the alloy wheels. So all the OEM alloy wheels have this certification. ये JWL एक certification होता है जो कि अच्छे क्वालिटी के alloys पे होता है. आप उसको बहुत सारे vehicles में देख चुके होंगे. Okay, the next question comes is why MGP alloy wheel? Well, there are very limited options as far as OEM wheels are concerned when we are looking at 13 inches, and MGP only makes one at this point in time. There is
or there are multiple options in 14-inch rim even from MGP, and also there are many other aftermarket brands like Neo, Platy, Momo and many more. So there are quality aftermarket alloy wheels, but I somehow do not like the way they look because they are very flashy and I want my car to look very classy and subtle and not very flashy. So not a big fan of the aftermarket alloys. The second question is, why not a 14-inch and why not a 15-inch, even 16-inch? People can go up to 21 inches. Well, it all boils down to the original size of the wheel. You cannot extend the size beyond a limit, and the limit is approximately 2 to 3% of the overall circumference or diameter, which we will discuss later. तो मैंने ये alloy wheel इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये जो alloy wheel है ये 13 इंच का है और मारुति एकमात्र यही alloy wheel है जो बनाता है 13 इंच में। बाकी 14, 15, 16 में उसके alloy wheels आते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। आफ्टर मार्केट alloys भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप 14, 15 इंच लगाएंगे तो बाकी चीज़ें उसके साथ चेंज हो जाती है, जो वीडियो के बाद में मैं डिस्कस करता हूँ। Next comes the PCD of the car, and the PCD is nothing but the pitch circle diameter, and for Alto 800 it is 100 PCD. Many other standard cars use the same PCD which is 100 PCD यूज़ होता है बहुत सारे गाड़ियों में। Alto 800 का भी PCD 100 है। There are a couple of things that you need to buy with the alloy wheels. One is the wheel cap that you see on your screen, and it's a MGP piece. Again, I'll link the part number and the buying link in the description, and also the lug nuts. So the lug nuts are different for alloys, they're very specific. We need to buy that as well. Moving on to the next part, that is tires, and I chose Yokohama Earth1 for my car. This tire was suggested by many car enthusiast friends of mine, and it is indeed a very good tire, very silent and has a lot of grip. The Yokohama Earth1 also provided the size that I was looking for my car. It's not a very usual size, but I found it in Yokohama and therefore I chose it. I got the tires shipped to me from Nagpur as the size was not available with any of the dealers in Hyderabad. Thanks to Aman from A+ Tires Nagpur. Continuing on with the technical section, the numbers on the tires mean something and they're very specific. They tell a lot about the size of the tire, the load rating of the tire, and many such information that you might need to know in order to choose the right tire for your car. तो टायर के ऊपर जो लिखे हुए नंबर्स होते हैं उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है, उसका मतलब होता है। चलिए अब जानते हैं वो क्या होते हैं। जो पहला नंबर आपको दिख रहा है 205, वो है विड्थ ऑफ द टायर, मतलब टायर कितना चौड़ा है। सो द फर्स्ट नंबर दैट यू सी ऑन योर स्क्रीन विच इज 205 for this example is the width of the tire, that is how wide the tire or the contact patch is. The width of the tire is generally denoted in millimeters, which is 205 mm in this example. So जो टायर का width होगा वो millimeters या mm में mentioned होता है। So इस example में आप जो 205 देख रहे हैं वो millimeter value है। So the next value after the slash is the profile of the tire. The profile of the tire is nothing but the distance between the contact patch and the rim. The number 55 in this example is not the millimeter value for the tire's profile. This is a commonly made mistake by many people. The value is nothing but the percentage of width. So in this example, it is 55% of 205 mm. That is how much the profile of the tire is. And due to the same reason, this is also called the aspect ratio of the tire. तो एस्पेक्ट रेशियो होता है आपका पहले नंबर का परसेंटेज, जो कि इस एग्जांपल में 55% ऑफ 205 mm, वो होगा आपका एस्पेक्ट रेशियो या टायर का प्रोफाइल। कई लोग ये गलती करते हैं कि उनको लगता है 55 अगर लिखा हुआ है तो 55 mm उसका प्रोफाइल है, जो कि गलत है। Alright, now comes the next part. R stands for radial, and this is only for cars. In bikes the R does not stand for radial tires. तो जो R लिखा हुआ रहता है वो है रेडियल टायर के लिए, और ये गाड़ियों के टायर में ही सिर्फ रेडियल मीन करता है। अगर आप बाइक के टायर पे R देखते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो रेडियल हो। And the next part is the 16, which is nothing but the diameter of the rim, and this diameter is denoted in inches. So 16 stand for 16 inches diameter. So जो 16 नंबर लिखा हो या 16 नंबर लिखा हो है वो है आपके रिम का डायमीटर, और ये इंच में नापा जाता है, ये mm में नहीं होता। तो 16 मतलब 16 इंच। And then there are load ratings and speed ratings that you can research further to know more.
Alright, now we come to the calculation part, and Alto 800 is supplied with a 145/80 R12 tire from the company. R12 stands for 12 inches of rim and 145 is the width, and the profile or the aspect ratio is 80. So I had to find a tire which would not change the diameter or the circumference of the tire to a great extent, and the right value I found was 165/65 R13. I will share the link of the calculator where you can actually calculate the equivalent tire circumference or diameter. Just by providing the values of the new tire and the old tire, you can actually calculate the final difference of diameter and circumference, and this just makes the job easy. तो मैंने कैलकुलेटर को यूज़ किया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और इससे मैंने जो नया टायर है, जो अपसाइज टायर है, उसका फाइनल सरकमफ्रेंस और डायमीटर कैलकुलेट कर लिया है। ज़्यादा कुछ यहाँ पे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस वैल्यूज़ डालने हैं पुराने और न्यू टायर के, और ये कैलकुलेटर आपको बता देगा कि जो फाइनल साइज़ है वो क्या है, उसका सरकमफ्रेंस क्या है, डायमीटर क्या है, और दोनों में डिफरेंस कितना है। तो एक रूल आता है जो कि 2 to 3% डिफरेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मैंने जब ये चूज़ किया तो वो उस वैल्यू के अंदर ही था। सो इस तरीके से हम लोग सेफ़ है। स्पीडोमीटर रीडिंग भी गलत नहीं होगा, ओडोमीटर रीडिंग भी सही रहेगा, और जो टायर है वो कहीं पे बॉडी पे या फ्रंट में टच भी नहीं होगा। So as an upgrade for my Alto 800's tire, the upsized tire is 165/65 R13 and it is a Yokohama Earth1. The tire is extremely good in terms of grip levels and also the reduced noise levels. तो मैंने Yokohama Earth1 टायर चूज़ किया है अपने कार के लिए, और 165/65 R13 साइज़ चूज़ किया है। ये बेस्ट पॉसिबल साइज़ है Alto 800 के लिए। With this we come to the end of this video, and I hope you liked the video and you learned something new. If you did, do give it a thumbs up and share it with your friends and family who might be interested in such videos. If you are new to the channel, do consider subscribing. अगर आप चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। Thanks again for watching. Have a nice day.